Honorable Speaker, sir. So the issue which I am raising right now is pertaining to Minority Welfare Department, sir. Sir, so the Minority Welfare Department funds are not been getting released, sir, due to which the minorities are facing very hardship, sir. Sir, through you, firstly, sir, I request the Honorable Finance Minister Saab, the Minority Welfare Department Minister Saab to please call for a meeting, sir, so that we could mention, sir. Sir, firstly, sir, when I say about Minority Welfare Department, sir, the RTF, the budget allocation is 336, sir. So BRO's issues are 118. The actual budget requirement is 431. Additional budget which is required is 195.49, sir. Sir, when we talk about MTF, sir, the budget allocation is 70.880, sir. The BROs issued are 35.40, sir. The actual requirement is 88.06 crores, sir. The additional budget required for clearing is 17.26 crores, sir. Sir, for the overseas scholarship, sir, I'm just finishing, sir. Sir, for overseas scholarships, the budget allocation was 118, sir. The BROs issued were 59, sir. The actual budget requirement is 178.01. The additional budget required is 60.01 crores, sir. Pre-matric scholarship, sir, budget allocation was 1.73, sir. But actual releases are only 5 crores, sir. The Honorable CM has assured in this House that the minorities will be treated on par with SCs and STs, sir. SCs and STs are being given the pre-matric scholarship, but the Muslim minorities are not been given, sir. The Shadi Mubarak, sir, budget allocation is 450, sir. BRO's issues are 450. Actual budget requirement for clearance of Shadi Mubarak scheme is 750 crores, sir. The additional budget required is 300 crores, sir. Bank link scheme, sir, the budget allocation is 150. The BRO's issued is 75. Actual budget requirement is 500 crores. And additional budget required to clear the old is 350 crores, sir. Work board, sir, allocation is 68 crores. BR is issued for 34 crores, sir. The actual requirement is 200. Additional budget is 132, sir. So microcredit interest and TS Prime and industries, sir. The additional budget which is required is 25 crores and 25 crores, sir. इमाम मौज़नों की तनख्वाह, सर, मार्च के महीने से नहीं आई, कल से दे रहे हैं, सर. जुलाई तक भी नहीं आई है. 10,000 एप्लीकेशंस दिए हैं, 7,000 पेंडिंग है, उसको भी दीजिए. ओवरसीज स्कॉलरशिप, सर, 21 से अब तक नहीं आई है, उसके लिए भी मैं कहूंगा कि उसको रिलीज करिए. ऑनरेबल स्पीकर साहब, यू विल बी सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड, सर. यू विल बी सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड व्हेन आई से दैट कि आरटीएफ और एमटीएफ में 2014 से लेके अब तक, सर, अब तक पैसे रिलीज नहीं करे. 14 और 18 के वेव कर दिए, 18 से लेके अब तक नहीं दिए. 2015 में 1.5 लाख दरखास्तें आए लोन के लिए, और वो लोन के दरखास्तें आने के बाद 2014 से लेके अब तक एक पैसा नहीं दिए सब माइनॉरिटीज को लोन. तो अगर ऐसे हालात रहेंगे तो हुकूमत के साथ आएंगे. मैं ये उठा रहा हूं इसलिए कि आप देखिए कि ओवरसीज स्कॉलरशिप के लिए भी, सर, 22 का सीजन के लिए दरखास्तें बुलाए गए हैं. 900 दरखास्तें आई हैं, उसमें से आपको कमेटी डाल के क्लियर करना है, वो भी क्लियर नहीं करे, सर. कोर्सेज खत्म हो गए, ना स्कॉलरशिप आ रही है. तो मैं आपके जरिए दरखास्त करूंगा कि प्लीज फाइनेंस मिनिस्टर साहब को एक मीटिंग बुलाओ. बोलिए साहब, ये स्कॉलरशिप के इश्यूज को क्लियर करने के लिए, ओवरसीज के लिए और मुसलमानों को लोन्स देने के लिए. दलित बंधु दे रहे हैं, हम इस्तेकबाल करते हैं, दे रहे हैं. बीसीस को दे रहे हैं, हम उसका भी इस्तेकबाल करते हैं. मुसलमानों को भी कुछ दीजिए, आपसे उम्मीद है. इलेक्शन का वक्त है, अगर मुसलमानों को यह नहीं मिलेगा तो इसके क्या नतायज होंगे, यह आप बेहतर जानते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया स्पीकर. गौरव సభ్యులు అడిగిన విషయాన్ని మేము నోట్ చేసుకుని ఇది ప్రభుత్వానికి నివేదిక సమర్పిస్తాం.